Hi friends, this is Anchal and today I'm here to tell you 7 must-know rules of adverbs. As you have demanded this, I am here to tell you what are the rules or where is adverb used. अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि adverb कहाँ use होता है, तो can you tell me? See, bookish language में what we have seen is we have always seen that adverb is a word that can only qualify an adverb, a verb and an adjective. But in my opinion, adverb is the only word that can qualify each and every part of speech, right? So let's begin with the rules of adverb. What is it and where shall it be used? Let me tell you, adverbs के जितने भी rules हैं, वो generally based हैं उसके placement के ऊपर. So let's have the first rule that says whenever we have more than one adverb in a sentence, जब भी हमारे पास एक sentence में एक से ज़्यादा adverb होता है, तो हमें कौन सा sentence structure follow करना चाहिए, ठीक है? When we have more than one adverb in a sentence. See, many of you might know the rule because it's a very famous rule. कुछ लोगों को आप में से पता भी होगा कि ये रूल कौन सा है. MPT रूल अगर आपको याद हो तो, जिन्होंने पढ़ा है, कौन सा रूल होता है? Whenever we have subject, see the general statement or the general structure of the sentence is subject plus verb plus object. जो जनरल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. बट व्हेन यू आर अवेलेबल विथ मोर देन वन एडवर्ब, देन इन दैट केस यू प्लेस द एडवर्ब ऑफ मैनर फर्स्ट, देन द एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड देन द एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट? तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपके पास है वो बोलता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप ये बताएंगे कि काम कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है और कब हुआ है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट clearly. He was badly near his grandmother's grave, crying yesterday. Now, can you tell me, is this sentence correct? Pause the video and see if it's correct. I'm sure you must have got the error. What it says, he was badly near his grandmother's grave crying yesterday. It doesn't make any sense, isn't it? We said that we need to place the subject at first, which is he. So we will place he here. After that, the verb should have been placed. And where is the verb? He was badly. ये verb है, नहीं है. And what is the verb here? He was doing what? He was crying. So crying will be cut from here and it will be placed after the subject. He was crying. ऑब्जेक्ट क्या है अब इसमें? जल्दी से बताइए. He was crying. क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया है? क्या इनके क्राई करने की वजह से किसी और चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नहीं है दैट मीन्स यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ओमिट कर देंगे. Which says if you do not have an object, you will omit this object and move further. So he was crying. How? Manner. कैसे रो रहा था? Badly. So we'll write badly here. Next is place. Can you tell me where was he crying? He was crying near his grandmother's grave. Place. And when was he crying? Yesterday. So the correct statement will be the subject he was crying, verb badly, how, near his grandmother's place, and yesterday, that is the time. So the correct sentence is he was crying badly near his grandmother's grave yesterday. Now the next rule that we have is related to enough. There's a word called enough and that can be placed as an adjective and as an adverb as well. So it says enough used as an adjective and enough used as an adverb. So where is it placed if it is used as an adjective and as an adverb? कहाँ पर लगाते हैं हम enough को? जब हम इसको एक adjective की तरह यूज करते हैं और जब हम इसको एक adverb की तरह यूज करते हैं. Let me give you an example and then you will understand it more clearly. There is space
enough for everyone in the house. Now here you have the sentence, there is space enough for everyone in the house. घर में सभी के लिए पर्याप्त जगह है. So here you have the word space. Now can you tell me for what is enough used? Enough is used for space, and space here given is noun. And when enough is used for noun, it is an adjective. And whenever enough is used as an adjective, you always place it before the word it qualifies. तो ये उस वर्ड से पहले लगेगा हमेशा जिस वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा होगा, अगर इनफ एडजेक्टिव के जैसे यूज हुआ है तो. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनफ किसके लिए यूज हुआ है? स्पेस के लिए, और स्पेस क्या है? नाउन, इसलिए हमने इसको एडजेक्टिव रखा है. सो हियर इनफ विल नॉट बी प्लेस्ड आफ्टर स्पेस, रादर इट विल बी प्लेस्ड बिफोर स्पेस. यहाँ पर इसके बाद नहीं लगाया जाएगा, बल्कि हम क्या करेंगे? स्पेस से पहले लगाएंगे. क्यों? क्योंकि स्पेस ही वो वर्ड है जिसको इनफ क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव के तौर पर. तो लिखेगा सेंटेंस क्या? देयर इज इनफ स्पेस फॉर एवरीवन इन द हाउस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इनफ यूज्ड एज एन एडवर्ब. व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, व्हाट शुड बी फॉलो? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. ही हैज वर्कड हार्ड इनफ फॉर द competition. Again, he has worked hard enough for the competition. In this sentence, you can clearly see we are talking about he, the person, and he has worked. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम he की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने मेहनत करी है. कैसी मेहनत करी है? Worked is the verb here. कैसी मेहनत करी है? Hard, right? So this is the adverb. And कितनी कड़ी मेहनत करी है? How much? To what extent has he worked hard? Enough. So again, it is an adverb here, which is qualifying an adverb. An adverb is the only word which can qualify itself. So here, the usage of adverb is correct. Why? Because when we use enough as an adverb, we place it after the word it qualifies. यहाँ पर इनफ का यूज सही है. क्यों? क्योंकि इनफ जब एडवर्ब के जैसे यूज होता है तो वो उस वर्ड के बाद लगता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा होता है. तो यहाँ पर इनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? हार्ड को. तो हार्ड के बाद लगाया गया है जो कि सेंटेंस को करेक्ट मानेगा. नाउ द फोर्थ रूल दैट वी हैव इज रिलेटेड टू वर्ब्स ऑफ सेंसेशन. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन? क्या आप बता सकते हो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन क्या होते हैं? देखिए, द वर्ड्स दैट वी हैव आर लाइक लुक, अपीयर, सी, smell, sound, taste, etc. These verbs are known as verbs of sensation. इन्हीं को हम बोलते हैं verbs of sensation. And let me tell you, whenever we have verbs of sensation, we can never use an adverb after it. हम इसके बाद adverb का use कभी भी नहीं कर सकते. तो हम करेंगे क्या? We'll always use an adjective after it. For example, if I say, it smells badly, or if I say he looks sadly. Do you find these sentences correct? क्या आपको ये sentences correct लग रहे हैं? It smells badly गलत लग रहा है. He looks sadly गलत लग रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ adjective होनी चाहिए और हमने लगाया क्या है? Adverb लगाया है. तो सेंटेंस को अगर सही करना है तो हम लास्ट के एल वाइज को हटा देंगे और क्या बनेगा? इट स्मेल्स बैड, ही लुक्स सैड. सो व्हेनेवर वी हैव दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस लाइक वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वी विल ओनली यूज एडजेक्टिव आफ्टर देम. Now the next rule that we have is it says whenever we have adverb of frequency in a sentence, where is it placed? It's placed. See, with this we have two rules. The first says when the verb is of single word. यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन कहती है कि वर्ब जब सिंगल वर्ड का है, सो मे बी ओनली द मेन वर्ब इज गिवन इन योर सेंटेंस, तो सिर्फ मेन वर्ब दिया हुआ है. और दूसरी कंडीशन जो है वो ये कहती है यू शुड हैव मोर देन वन वर्ड फॉर वर्ब. व्हेन वी हैव मोर than one verb.
जब हमारे पास एक से ज्यादा वर्ब दिया होगा, so maybe helping verb is also given, main verb is also given, and along with that a special category of verb is also there. Special categories, do you remember what are special categories? It's infinitive, gerund, or participle, right? So let's take an example to understand this. The first says, he drops me to office daily. He drops me to office daily. वो ऑफिस हमें रोज छोड़ता है. तो यहाँ पर जो he लिखा है, can you find the verb given in the sentence? The verb is drops, right? Now the verb is a single word. In this condition, adverb of frequency is placed. Adverb frequency पहली बात तो define क्या करती है? What does it define? It always says that how many times a work is done. So if I say he usually, अक्सर, he usually drops me to office daily, तो इस condition में आप क्या लगाएंगे? जब verb single word का होगा, क्या करोगे? Before the main verb. And after that, if I say one more sentence is written, he is seen talking to them. He is seen talking to them. Now here is also a verb, seen is also a verb, and talking is again a verb, and here we have more than one verb. So in this condition, again we will place adverb of frequency before the main verb. So adverb frequency को हमेशा main verb के पहले लगाया जाएगा, no matter ये single word का verb हो या एक से ज़्यादा word का verb दिया हो, right? So let's have a look at this sentence. He is seen talking to them. Here is a verb which is not the main verb. It's a helping verb, isn't it? Seen is the main verb given over here, and talking is a special category of verb. So what should we do? He is generally seen talking to them. So whenever we have a verb given in a sentence and you have to place adverb of frequency there, you will only place it before the main verb. जब भी हमारे पास adverb frequency लगानी होगी हमें verb से पहले, तो वो हमेशा verb से पहले ही लगाई जाएगी. Now we have the sixth rule, and it's really very important, let me tell you. It contains law of inversion. So what does this mean? See, let me tell you one thing. Whenever we have a sentence written somewhere, the basic sentence structure that we follow is subject, verb, object. जब भी हमारे पास एक सेंटेंस हमें लिखना होता है, तो जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. बट लॉ ऑफ इन्वर्जन सेज दैट यू नीड टू इन्वर्ट द वर्ब फर्स्ट एंड देन यू विल प्लेस द सब्जेक्ट. लॉ ऑफ इन्वर्जन ये कहता है कि आप वर्ब को पहले लगा दोगे और सब्जेक्ट को उसके बाद लगाओगे. It's not compulsory that you will place the main verb first. Maybe helping verb will also help you. ठीक है, तो जब भी आप verb को पहले लगाने जाते हो तो helping verb बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब भी आपको law of inversion को फॉलो करना होता है तब. So in adverb we again have a rule of law of inversion over here. We have a lot of rules for law of inversion, but here we'll discuss only one, which says whenever a sentence starts with an adverb, use law of inversion. जब भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं एडवर्ब से, तो उस कंडीशन में हमेशा हमें लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करना है. जैसे कि अभी हमने बताया कि एक नॉर्मल सेंटेंस पहले बताता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पर हम जब लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं तो हम सबसे पहले वर्ब को लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब को या मेन वर्ब को. ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करने के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है दैट आर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. सेंटेंस लिखा है हार्डली शी हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड. मुश्किल से वो स्टेशन पहुंची ही थी जब ट्रेन आ गई. तो क्या स्टेटमेंट हुआ? स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है हार्डली से, एंड you all know hardly is an adverb. The statement starts with hardly and you all know that it's an adverb. So here we have placed subject and then the verb, which is incorrect. Whenever the sentence starts with an adverb, we always place the verb first and then the subject. After that, the main verb. So what should be the sentence? Hardly
Had she reached the station when the train arrived? This is the correct rule. When you follow law of inversion, we place a helping verb first. हम helping verb को पहले लगा देते हैं और उसके बाद subject का use करते हैं जब भी हमारे पास law of inversion की कोई भी concept आता है. I know you people must be curious about law of inversion के और क्या rules होते हैं. That will be provided in the next video of mine. Fine. Now comes the last rule of adverb for the day, and that says there's a word called as. And we will never use this word after some words. As is not used with words like, and what are these words? It's name, elect, choose, make, call, consider, etc. So when you have words like these in your sentence, you will not place as after this. अगर आपके सेंटेंस में ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको मिलते हैं तो इनके बाद आप as का यूज नहीं करोगे. ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ sentences. We will have a look at certain sentences to understand this rule more clearly. So the first says, she is elected as the president of our club. Or if I say, he thinks her as a fool. So can you tell me, are these sentences correct? I told you whenever we have elected written, we will not use as after it if we have a noun after it. अगर हमारे पास noun है इसके बाद में तो हम as का use नहीं करेंगे. He is elected the president of our club. अब ऐसा क्यों? Why? Because as means likewise. If I say she was given the designation of a president, so she was given the designation, isn't it? It doesn't mean that the post given to her was like a president. Rather, it was the post of president, isn't it? So here we do not write as. अगर हम sentence की बात करें, अगर as लग जाता है तो as का मतलब होता है जैसे. तो अगर इस sentence लिखोगे she is elected as, वो प्रेसिडेंट के जैसे अपॉइंट हुई है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट हुई है, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है ना, उसके जैसे नहीं अपॉइंट हुई है, इसलिए हम आज का यूज नहीं करते. सिमिलरली, ही थिंक्स हर एज अ फूल, ही थिंक्स हर अ फूल. अगेन वी विल नॉट राइट एज आफ्टर think. I suppose I've not think over here, so think will also be added over here, right? So these were the 7 must know rules of adverb, and you need to take point on all of these rules. Learn them, keep them in your mind, and solve as many exercises related to adverb. If you have any problem, you can always mail me at my ID. Thank you for watching.